the chef Ritika. A very happy Ganesh Chaturthi. Now Bappa has arrived, so let's make some amazing modak for him. Today's special recipe is chocolate Paan Modak. It is very easy and very delightful. Let's get started with the recipe. So I have taken melted chocolate over here. मेरे पास यहाँ पे milk chocolate है. Just in case you don't like milk chocolate, तो आप dark chocolate और white chocolate भी ले सकते हैं. And I have this modak का mold, silicon mold, which is easily available in the market. अब हम हमारी चॉकलेट को लेंगे, मिल्क चॉकलेट को, और इसे धीरे धीरे पोर करेंगे हमारे मोल्ड के ऊपर. We'll slowly and gradually fill each and everything. पूरा फिल करने के बाद we'll slowly and gradually tap this. इससे क्या होगा, जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे. एंड अब जो हमारे पास ऊपर एक्सेस चॉकलेट है हम उसको रिमूव कर लेंगे. एक्सेस चॉकलेट हटाने के बाद हम इसको दोबारा एक बार टैप करेंगे एंड वी लेट इट सिट फॉर 1 मिनट लाइक दिस, जिससे चॉकलेट की एक कोटिंग बन जाए. अब हम हमारा मोल्ड लेंगे एंड इसको उल्टा कर देंगे हमारे चॉकलेट मोल्ड के ऊपर, जिससे जितनी भी एक्सेस चॉकलेट है वो नीचे गिर जाएगी एंड हमें इसके अंदर एक पतली सी लेयर मिलेगी चॉकलेट की. नाउ विल रिमूव द एक्सेस चॉकलेट दैट्स ऑन द टॉप एंड इसको साफ़ करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 मिनट के लिए, जिससे जो बेस है वो हार्ड हो जाएगा. अब हमारी जो चॉकलेट्स है हम उसकी फिलिंग बनाएंगे. पहले हम ले रहे हैं गुलकंद. जो मार्केट में अवेलेबल गुलकंद है आप वो ले सकते हैं. गुलकंद के बाद ग्रेटेड कोकोनट, थोड़ी सी टूटी फूटी. अब हम एक पान का पत्ता लेंगे एंड उसको स्लोली रोल करेंगे. अब आप अपनी किचन सिजर्स यूज़ कर सकते हैं एंड थोड़े थोड़े स्निप्स काट सकते हैं इसके अंदर. अगर आपको पान के पत्ते का टेस्ट नहीं पसंद तो उसको छोड़ भी सकते हैं, बट दिस विल ऐड अ वेरी नाइस फ्रेशनेस टू द चॉकलेट. इसको डालने के बाद हम थोड़े से गुलाब के पत्ते लेंगे और उसके भी ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स काट लेंगे. अब हम इन सबको मिक्स करेंगे. नाउ दिस इज़ रेडी. अब जो हमारी गुलकंद वाली फिलिंग है वो हम सब में डालेंगे थोड़ी थोड़ी एंड डाल के इसको प्रेस करेंगे. नाउ दिस इज़ रेडी. अब हम इसके ऊपर डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट की एक और लेयर. वील अगेन टैप इट एंड जो हमारी एक्स्ट्रा चॉकलेट है हम उसको निकाल देंगे. अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स एंड देन ये बिल्कुल सेट हो जाएगा. सो नाउ ये सेट हो चुका है. मैंने इसको आधे घंटे के लिए अपने फ्रीज़र में छोड़ा था. अब हम इसको एक एक करके डीमोल्ड करेंगे. आप इसको बस स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रेस करिए एंड आपका मोदक पॉप आउट हो जाएगा. नाउ आई हैव एडिबल गोल्ड डस्ट एंड इसको और फेस्टिव बनाने के लिए हम उससे इसका थोड़ा थोड़ा गार्निश करेंगे. अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं. So now our amazing chocolate Paan Modak are ready to eat. Ganpati Papa Moria.
So I have this packet of Oreo and I'm gonna open it. Now what I'm gonna do is I'm gonna separate the cream from the biscuits. I've separated the cream from the Oreos and now I'm gonna take a blending jar. I'm gonna put the Oreos inside it. And I'm going to blend all of this. I'm gonna grind this together. As you can see here, I have a fine powder, and now I'm going to add some malai to it. So this is some malai. I'm going to add it to it, and I'm going to make it into a fine dough. If you feel the malai is too less, you can always add more. So the Oreo dough is ready, and now we're going to start working on the cream. So I have the Oreo cream here, and what I'm gonna do is I'm gonna add some grated coconut to it. I'm gonna mix it well. So what coconut does is that it binds the cream together. So this is ready, and now we're gonna start making the modaks. I have two modak shapers here. And I'm going to use this one for making the modaks. So for that, I'm going to take a ball of Oreo and I'm going to put it inside the mold so that it fits inside properly and it gets the shape of it. If there's excess, you can just remove it from the top. And I'm gonna make a hole here so that I can put the cream inside. I'm gonna take some cream and I'm gonna put it inside this. And now I'm gonna cover it again with a layer of Oreo. So whatever excess is there, you can just remove it from the sides and from the top. I'm now going to open it. As you can see here, we've got the perfect shape. Now I'm going to shape the other modaks as well. So this is the final shape of the modak.
So my Oreo Modaks are ready and they are ready to be enjoyed. So do try this at home and let me know in the comment section below how you guys liked it. Until then, stay tuned for more videos. Everyone, I'm Shruti and I'm from Singapore, and August is a month full of festivals and Ganesh Chaturthi being my most favorite festival of all. So when you say festivals, we're obviously going to make sweets. So I'm going to make you a traditional Konkani sweet which is called Patoli. Patoli is a traditional Konkani dessert which is like a modak which is wrapped in a turmeric leaf. Some people also wrap it in banana leaves and they steam it. So let's get cooking. So I have preheated my pan and we are going to make the stuffing first so it gets time to cool down. So I'm adding the cup of coconut. I'm just going to dry roast this for about a minute. Keep your flame medium, not too hot. I don't want to toast the coconut, I just want to draw out some moisture out of it. And about 40 seconds later, you add a 3/4 cup of jaggery to this. You can reduce the amount to half a cup if you don't like it very sweet. And the only purpose to do this is to melt the jaggery into the coconut. My flame is medium low. So it's been about 2 minutes since I have added the jaggery and I have been stirring it, and the jaggery has completely melted. I'm going to add the elaichi powder now, and I'm going to switch off the flame and let this cool. So we have our stuffing ready. So I have boiled a cup of water here. I'm going to add a teaspoon of ghee. And I'm going to add a teaspoon of salt. And I'm going to add a teaspoon of sugar to this. And I'm going to stir this. So once everything is dissolved in this water, I'm going to add a cup of rice flour to this. Make sure your flame is low and switch off the gas.
with the back of my spoon, I am just going to mix this well. You're not supposed to mix it a lot. Just mix it so that all the water gets absorbed. And that's it. I'm going to cover this and I'm going to wait till this cools down. So I have emptied the rice flour and the water mixture, and it looks crumbly, so and it's a little warm, so just keep making the dough now as you as it cools down. If you can't handle the heat on your hands, just wait for it to cool down a little more, but it's best to do it when it's a little warm. So as you can see, this is coming together and it's a little warm, but it's not too hot now. So the whole thing is to just keep kneading it till it becomes really soft and you don't see any cracks on the dough. It has to look smooth like a chapati atta. So keep kneading it, it will get there. Just have patience when you do so. So as you can see, after kneading it continuously for 2-3 minutes, the dough has come together, and I dipped my hand twice in some water just lightly so that I could keep the dough a little moist. And now my dough looks smooth and nice, so I'm just going to take some ghee on my fingers. I have some ghee right here, and I'm just going to apply this lightly over this. I'm just going to let it rest, and we will start now making our patolis. So now let's begin the steaming of the patoli and stuffing the patoli in the rice atta that we made. So here I have put a pan with some water and a stand like a ring. You can put a steel ring if you have one. So that this is going to be my steamer, and I'm going to steam the patolis. I'm just going to put the plate over this thing and steam it. So I've started heating the water now, and let's prep the turmeric leaves. So now in the market you get different sizes. In India we get the smaller version, so you don't need to really cut it, but this is not going to fit in my kadhai, so I'm going to cut them into the plate size pieces. So I'm going to cut them equally in halves. So now I have taken out a small ball out of the dough. I'm going to make sure I press it and just kind of press it between my palms so it gets a clean texture. So now I'm going to take 1/2 of the leaf. I've washed these leaves with water and I've wiped them. I have kept some ghee and water on the side, so I'm just going to lightly dip my hands in water and just grease them with a little ghee and water together. So what I'm going to do is, so I'm going to put the ball, and I'm going to just make a flat chapati over the leaves with the help of some water so that it smoothens out. So make sure it's a very thin chapati over this. So once you get a thin chapati over this, just keep pressing it lightly and spread it around. And if you have excess coming out, just cut it or just remove it with your fingers. So I have flattened it on the turmeric leaf, as you can see, and I'm going to just stuff it with the coconut and jaggery mixture. Don't go all through the end because you need to. Now what I'm going to do is I'm just going to stick it, close all the ends, and I'm going to paste this. Make sure all your ends are stuck inside and it's wrapped well, and that's how you create these small little packets. And I'm going to arrange them on the plate. So now there is a small trick. So this leaf doesn't have a very thick vein, but this leaf will have. So when you sometimes fold it, it might just tear. So what you can do is, this is what my mom has taught me. So you turn the leaf behind
and you just lightly take your rolling pin and just kind of flatten that vein out so that the leaf doesn't tear when you fold it. That is one trick that I know. So I'm going to make the rest and steam them together. So I have got my water boiling in the steamer, and I have got my patolis ready. So I'm going to carefully keep them on the steamer. Please do not burn your hand when you do so. You can steam them in an idli steamer or a pressure cooker, removing the whistle. But I felt this is a slightly easier way of steaming them. So I'm just going to cover them and let them steam for about 15 to 20 minutes until the color of the leaf changes to greenish yellow. So I will show you that after 15-20 minutes. So it's been 15 to 20 minutes and my whole house is filled with the fragrance of these turmeric leaves. It brings me a lot of memories and nostalgia. So what you have to look for is the change of the color in the leaves. Now you must have noticed that it's become greenish yellow, as I mentioned, and the atta has cooked as well. So now is the time to remove this. So I'm going to take my tongs and I'm going to carefully remove them on the plate. Do not break them. And now I'm going to switch off the flame first. So as you can see, these are completely ready. So I'm going to plate them. So I'm going to plate them and open them. So there's one. And let me just get the other one as well. So just see from inside. So this is the coconut and jaggery and it's completely nicely packed. So now my patolis are ready and I'm going to attack them soon. I'm super excited for this festival of Ganesh Chaturthi and do try and make this at home and let me know how you like it. Keep watching my recipes and give me all the love this Ganesh Chaturthi. Thank you. Hi friends, this is Meena Rawat here. Today I am going to make Ganpati special snacks which is very easy to make at home. हम पैन को गरम कर लेंगे, थोड़ा हीट करेंगे उसको ताकि हम इसको सेक पाए पोहे को। गरम हो गया है, अभी फास्ट फ्लेम पे है, अभी हम एक बार स्लो फ्लेम कर देंगे, उसके थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे आएंगे और इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा सेक लेंगे। विदाउट ऑयल सेक रहे हैं अभी हम इसको, तो आपको वाइट वाइट दिखेगा। हल्का सा इसमें थोड़ा सा वो कुरकुरापन सा आने लगेगा। इसके बाद हम इसमें इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही हमको सेकना है। थोड़ी सी आवाज़ आने लगी कुरकुरे होने की सी। इसमें हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और ये जो हमने रखी थी हल्दी पाउडर उसको हल्का सा डालेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट करना है, इसलिए हम इसको फिर वापस से सेकेंगे। थोड़ा येलो कलर पकड़ लेगा इसके अंदर सीखने से, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल भी डाला है और हल्दी भी डाल दी है। पहले हल्का सा सेकने के बाद में तो क्या कलर अच्छा पकड़ लेगा। और मीडियम फ्लेम ही रखें आप। ये देखिए कलर आने लग गया इसमें। और ज़रूरी नहीं आप इसमें इसको नॉन स्टिक पे ही करें, आप किसी कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब एक बार मैं इस कढ़ाई में इसको डाल के देखूँगी। ये देखिए आवाज़ आने लग गई है और ये देखिए हल्के कुरकुरे हो गए हैं। हम इसको वापस डाल के अब इसमें एक बार मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी।
मैंने पैन को स्लो फ्लेम पे रखा है और 3 से 4 चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इसमें हम सींगदाना डाल देंगे। इनको थोड़ा सा सेकेंगे ताकि सीलापन भी निकल जाए और थोड़े से अच्छे कुरकुरे हो जाए, थोड़ा डार्क कलर हो जाए। क्योंकि जब ये सीखेंगे तो इनके छिलके थोड़े से अलग होने लग जाएंगे। कलर आने लग गया, इसके अंदर चेंज होने लग गया है कलर सींगदाने का। थोड़ी आवाज़ भी आने लग जाएगी चटकने की। देखिए आवाज़ भी आ रही है आपको। अभी हम इसको निकाल लेंगे। दूसरे बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद ये सीख गए हैं, कलर भी चेंज हो गया और आवाज़ भी आने लगी, चटकने लग गए हैं। इसके बाद में ये ड्राई फ्रूट जो हमने रखे थे, काजू और बादाम, वो डाल के सेकेंगे हल्के से। थोड़ा क्या काजू बादाम डाल देते हैं किसी भी नमकीन में अपन या फिर चिवड़े वगैरह में, तो एक रिचनेस लगती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़े हल्के गोल्डन कलर के करेंगे, भूरे रंग के हो जाए हमारे ये देखिए। हम ऐसे करके धीरे धीरे सभी सामग्री जो इंग्रेडिएंट्स है उन सबको थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे तो उसका कच्चापन दूर हो जाएगा। ये देखिए काजू ब्राउन हो गए हैं, इसका कच्चापन निकल गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से। अब जो दालिया था उसको भी हल्का सा कच्चापन दूर करने के लिए हल्का सा 2 मिनट के लिए, और इन सब चीज़ों को आप 2 से 3 मिनट 2 मिनट इतना ही सेकें, ज़्यादा सेकने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पैन गरम है और स्लो फ्लेम पे है, तो इस हिसाब से। और मैं अभी भी आपको यही बात बोल रही हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करें, आप कढ़ाई में भी ये चीज़ें बना सकते हैं। सेकते हम इसलिए ताकि किसी चीज़ का कच्चापन नहीं रह जाए। कच्चापन रहेगा तो चीज़ जल्दी ख़राब होगी, वो टिकेगी नहीं। ये देखिए ये भी हमारा हो गया रेडी। और हम इसको भी इसकी सहायता इससे निकाल लेंगे। अब हमारे पास मेन 2 चीज़ बची है, एक तो करी लीव्स, उसके बिना चिवड़ा अधूरा है। ये देखिए आवाज़ आ गई, ये चटकेगा तो ही कड़क लीव्स होगी इसकी। और चिवड़े में कड़ी पत्ता नहीं हो तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा लीव्स का। ऑलरेडी कुरकुरा बना के इसमें भी अब हमारी बची है चिली। इसको मैंने छोटे छोटे पीस करके किया है। थोड़ा तीखापन चाहिए हम लोग को। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम ऑयल यूज़ करें ताकि उससे हमारे लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए भी। ये देखिए अब इसको भी हम मिक्स करेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। सभी को अलग अलग फ्राई किया है और एक कर दिया है एंड में। इसलिए क्या है कि किसी को 2 मिनट सेकना है, किसी को 1.5 मिनट और किसी को 3 मिनट टाइम लगेगा, इस हिसाब से। और इन सबको मिक्स, जो हमने ये पोहा सेका था वो अब इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हल्का सा टेस्ट, ऑलरेडी चिली डाली है तो मिर्ची आप अपने टेस्ट पे डिपेंड करिएगा। नमक भी आपके टेस्ट के अनुसार होगा। चाट मसाला जरूरी है क्योंकि चिवड़ा है तो चटपटा होना चाहिए। अब इसको हम 8 से 10 दिन तक एक टाइट डब्बे में रखेंगे तो यूज़ करके आराम से आप खाइए। आपको लीफ अगर बड़ी बड़ी ऐसे दिख रही है तो आपको इसको करना हो तो आप चूरा भी कर सकते हैं इससे। ये देखिए चूरा हो गया लीव्स का। ये लीजिए हमारा चूरा तैयार है। अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं।
मैंने मिक्स करने के हिसाब से बड़े बर्तन में लिया था। आपका चिवड़ा तैयार है।